Diversification lowers the market risk. What are the different types of diversification? दो types के हैं diversification. एक diversification in crop production, changing the cropping pattern, और दूसरा diversification of productive activities. कह रहा काम ही कुछ और करो ना, क्या फार्मिंग लगा रखा है. Shifting of workforce from agriculture to other allied activities and non-agriculture sectors. The focus of this chapter is only on allied activities, non-farm employment, and other emerging alternatives of livelihood. Though there are many other options available for providing sustainable livelihood options. हमारा restricted है scope of the syllabus. दो डाइवर्सिफिकेशन है, एक डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग ही कर रहे हैं बट क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं. एक तो एक्टिविटीज ही अलग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो एक एक करके बात करेंगे. पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, शरीफ सा डाइवर्सिफिकेशन है. इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट मत रहो, सिर्फ वीट ही बनाते रह जाओगे, सिर्फ मेज ही बनाते रह जाओगे, क्या नहीं. मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा. थ्रू आउट द ईयर पैसे कमा पाओगे. डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स. बेसिकली द मेन एम इज टू प्रोवाइड शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. तो फूड ग्रेन्स आर grains for human consumption like rice, meat, waste. Cash crops, cotton, jute, coffee, sugarcane. Subsistence farming is the practice of growing farms or growing crops only for one's own use without any surplus or trade. और commercial farming market में बेचने के लिए. कोई doubt? तो diversification involves from change in the cropping pattern, shifting from only to food crops to cash crops as well. In India, agriculture is still dominated by subsistence farming, and the farmers give prime importance to cereals like wheat, rice, maize. Multi-cropping system reduces the dependence of farmers on one or two crops as they are engaged in a wide variety of crops. There is a need to encourage farmers to take up cultivation of a wide variety of crops. It will also raise their income. Diversification would minimize the risk arising due to price fluctuations in the crops. It would also reduce the risk occurring due to failure of monsoon. Diversification of crop production. छोटा सा इतना, बस इतना ही है, but important है. Diversification दो टाइप की है. एक है diversification of crop production और दूसरा है diversification of productive activities. वो बड़ा है. क्या कहता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज? यार कुछ और ही काम करो ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्यों? एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड्स टू फाइंड ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अदर नॉन फार्म सेक्टर्स. It would provide alternative avenues of sustainable livelihood and would raise the level of income. Non-farm activities have several segments. Some segments of non-farm activities possess dynamic linkages that permit healthy growth, while others are in subsistence, low productivity propositions. The dynamic subsectors include agro-processing industries, food processing industries, leather industry, tourism. Those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional household-based industries like pottery, crafts, handlooms, etc. तो अभी जो सबसे मजेदार पॉइंट यही होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. अभी हम पढ़ेंगे इसमें डेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, मल्टीपल एक्टिविटीज आएंगी as alternative sources of livelihood. जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ना डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, बड़ा रिस्की है. अकाउंट्सी को डाइवर्सिफाई करना है, तो एक ऑप्शन है डाइवर्सिफाई करना है.
साइंस भी ऐड कर दो, वो डाइवर्सिफिकेशन ही तो है। तो वो हो गई पहली वाली डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अभी पढ़ा ही रहे हो, अब आप नए सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हो, तो सिमिलर लाइन में ही नए सब्जेक्ट्स, तो आप फार्मिंग ही कर रहे हो, नए क्रॉप, चेंजिंग, यू आर चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट क्रॉप्स आप अब आप ग्रो करेंगे। एक है कि नई एक्टिविटीज ही अलग, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलते हैं या पूल पार्लर खोलते हैं या कुछ और करते हैं पढ़ाई से हटके, तो वो हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, फार्मिंग से हटके। एनिमल हस्बेंड्री होगा, फिशरीज आएंगे उसमें, जो भी मतलब अदर एक्टिविटीज फ्रॉम फार्मिंग। चलो खोलें स्पोर्ट्स अकेडमी।